हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिजिक्स के कुछ 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो कि एयरफोर्स, नेवी और अदर डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन 1, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। आपके ऑप्शंस हैं फिल्टर हॉट वाटर, बी डिस्टिल वाटर, सी फिल्टर वाटर एट रूम टेम्परेचर, डी साल्ट वाटर। इसका आंसर होगा डी साल्ट वाटर। Question 2. Two cars passing each other at high speed are in danger of swiping because options A of the increase in the air pressure in between space between them, option B of decrease in velocity of air molecule between them, option C of decrease in air pressure in space between them, ऑप्शन डी इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल बिटवीन देम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑफ डिक्रीज इन एयर प्रेशर इन द स्पेस बिटवीन देम। क्वेश्चन 3, the nuclear fission is caused by the impact of option A proton, option B electron, option C neutron, option D none of these। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। Question 4, which of the following is used as a coolant in nuclear reactor? Option A heavy water, option B cadmium, option C liquid sodium, option D graphite। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी liquid sodium। Question 5, which of the following has the best penetrating power? Option A alpha particles, option B beta particles, option C gamma rays, option D all of the same have penetrating power। क्वेश्चन 5 के आंसर होगा ऑप्शन ए alpha particles। Question 6, optic fiber are mainly used for which of the following? Option A communication, option B weaving, option C musical instruments, option D food industry। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए communication। Question number 7, which of the following are most penetrating? Option A alpha rays, option B beta rays, option C gamma rays, option D एक्स रेज। 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी एक्स गामा रेज। क्वेश्चन 8, all written materials which cannot be read easily can be read by option A cosmic rays, option B ultraviolet rays, option C infrared rays, option D none of these। 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी infrared rays। क्वेश्चन 9, cryogenic engines find applications in option A rocket technology, option B frost free refrigerators, option C submarine propulsion, option D researches in superconductivity। क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए रॉकेट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी वाटर, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। क्वेश्चन 11, the best colors for a sun umbrella will be option A black, option B black on top and white on inside, option C white on top and black on inside, option D printed all of the 7 colors of rainbow। क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी white on top and black on inside। क्वेश्चन 12, which of the following laws is explained by the statement that matters can neither be created for destroyed? Option A law of conservation of energy, option B Lee Chatterley's principle, option C law of conservation of mass, option C law of osmosis। आपके आंसर होंगे 12 के ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन 13, एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड, ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी गैसोलाइन, ऑप्शन डी डीजल। क्वेश्चन 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी केरोसिन। Question 14, which of the following is the correct combination of the invention and inventors and inventions? A Galileo Galilei transistors, B Eliza Thomson windmill, C jailbreak television, D Sir Frank Whittle laser। Question 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी jailbreak television। Question 15, who among the following laid the foundation of nuclear science in the country? Option A Vikram Sarabhai, option B Homi J Bhabha, option C M.G.K. Menon, option D Raja Raman। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ऑप्शन बी होमी जे भाभा। क्वेश्चन 16, in an atomic explosion enormous energy is released which is due to the option A conservation of neutron into protons, option B conservation of chemical energy into heat energy, option C
conservation of chemical energy into nuclear energy. Option D, conservation of mass into energy. Question 16, answer of option D, conservation of mass into energy. Question 17, what happens to the level of mercury in the barometer tube when it is taken down in a coal mine? It question option A, falls. B, remains unaltered. C, rises. D, rises then falls. Question 17 answer option C, rises. Question D, which of the following is a good nuclear fuel? Option A, uranium 238. Option B, neptunium 239. Option C, thorium 236. Option D, plutonium 239. क्वेश्चन 18 का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लूटोनियम 239. Question 19, in a barometer, mercury is preferred over water because option A, mercury is a good conductor of heat. Option B, mercury shines and therefore its level can be read easily. Option C, mercury has high density and low vapor pressure. Option D, mercury is available in a pure form. Question 19 का आंसर होगा ऑप्शन C, mercury has a high density and low vapor pressure. Question 20, a bomb is dropped at a point from a moving airplane. The pilot observes that option A, the bomb travels a curved path and falls some distance behind the point. Option B, the bomb transverses a curved path and falls some distance ahead. Option C, the bomb drops vertically downward. Option D, the bomb remains stationary in the air for some time. Question 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी, द बॉम्ब ट्रांसवर्स अ कर्व पाथ एंड फॉल some distance ahead. So thank you. This is the most important 20 questions of defense exam.